इनका पेपर का टॉपिक है एक्स-रे डिफ्रैक्शन एंड एक्सपीएस एनालिसिस ऑफ इंपीरियल पंचमार्क कॉइन्स। Thank you, Dr. Devendra Bahadur Singh, Assistant Curator, Bharat Kala Bhavan. Respected dignitaries sitting on the dais, Chair of the session, Professor Amit Kumar Upadhyay. With your permission, I would like to start my paper. The title of my paper is X-ray Diffraction and XPS Analysis of Imperial Punchmark Coin. We all know about punchmark coin, and we have seen how history has progressed about the study of punchmark coin. We have seen the changing contours of the study of PMC, especially after India's independence. In 1963, we have seen the work of Gupta, and from that work, we can understand that how punchmark coin can be classified. And this also is a fact that he tries to classify that punchmark coin based on the external study of that coin. This means he tried to study through the depiction which we can see from the naked eye. He also tried to discuss the evolution process which happened, which can be understood by the presence of symbol on all those PMC. So at least we have the classification now. On the basis of that, we are classifying PMC. Also, afterwards, we have seen the works, and I can quote the work of Savita Sharma on Indian punchmark coin, where we can see that how the cultural significance of one PMC was understood. So two mammoth work has come about PMC, and in this period, a number of facts also emerged, and also this is the time when we have to look that classification again, and also we have to find out that who was the issuer of that coin. Because this is the question which is very pertinent nowadays. Also, we have to understand the economic position of the then period through PMC. So keeping in view of that, and also we already I referred the work of PL Gupta. He has done the external study. Through my paper, I want to propose the internal study of PMC. This means I am going to study about the technique, about the metal content, and for that I have chosen the two methods. The first one is XRD and the second one is XPS. So here I am proposing the elemental analysis of the punchmark coin. Next slide. Next. Here you can see that I have chosen 9 coins to do the XRD and XPS, and I am thankful to the Newspaper Society of India that they have given this coin to me for the non-destructive study, that is XRD and XPS analysis. So you can see I am not going in detail of all those coins because we already know about the series 1st, series 2nd, series 3, 3rd, series 4th, series 5 and series 6. This you can see in the book of P.L. Gupta, and I am following his classification. Next slide. Here you can see the series 7, series 8, and one coin I have chosen that is proposed by P.L. Gupta, that is named as 0 series, and this is from the Kasi Janpat. So altogether I have chosen 9 coins for the XPS and XRD analysis. In the beginning we use scientific method to clear the organic matter from the surface of the coin, and then we have applied this XPS and XRD methods. Next slide. So this is the methodology. I will be very short about that also. XRD provides us the detailed information about the crystallographic structure, chemical composition and physical properties of a material, and here our material is quartz. And this XPS provides us the composition, the metal composition in a particular kind, as well as
the binding energy of the atom. Next slide. So these are the two machines which I have used in the lab of Banaras University in IIT. Next. Here you can see the XRD data of 8 punchmarked coin. I have not taken the zero switch coin here. And here you can see the peak position of the different sample. And in sample 2, 58.3% of silver is available. In sample 3, 51% silver. In sample 4, 49.5, then 38, then 62, 37.1, 55.6, and then in Kasi PMC you can see this Janpat coin, you can see the highest silver content available in that coin, and that is 67.3%. This also I would like to mention that from the XPS analysis, whatever we have done till yet, the availability of gold also came into only a single coin, that is the Kasi Janpat coin, and it contains 3.3% of gold as well with the silver. Next. Here you can see the same thing, that you can see the peak position of the copper again in the normalized intensity, and again when you plot for all those symbols from series 0 to series 8, you will find that there is no again shift in the peak position, means to say that atoms of copper is also not binding with the silver. Next. Again, this is the picture for same for the lead. Next. This is the mathematical fitting of the data about which I am discussing. This is about only one sample, that is sample 1. Next. So through this, finally summarizing all those things, we can say that whatever measurement we have carried out through these two technologies, XRD and XPS, it clearly indicates the presence of silver is dominating along with some other element as an impurity. The surface of the coin gets oxidized and prevents the casting information of the chemical composition of coins. The results show a high level of metrological knowledge of alloying skill between the 6th and the 3rd century BCE. The results also shows that the coins under consideration were used at different times with technological changes. The elemental analysis revealed that the coin have non-uniform distribution of element with varying percentages. Next slide. This is my team with which I am working. Professor Rajiv Vikas is the now director in IIT Dhanbad. Professor Chalpatidam, Dr. Neeraj Giri, Soumya Chatterjee, Sneha Raghuvanshi, and Abhi Pratap Singh. Thank you. नमस्ते और प्रसन्न माइसेल्फ प्रफुल्ला खान, मैं राजस्थान जयपुर से न्यूज़मेटिस्ट हूँ। मैं अमित जी ने बहुत अच्छा पेपर तैयार करा है, लेकिन मेरा एक निवेदन है, अमित जी ने जो पेपर तैयार करा है वो जो किताबों में उसके ग्राउंड पे है, बेसिकली बहुत अच्छा लिखा है, मैं बहुत स्टडी करी है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली कॉइन्स के साथ काम करा है। मेरा भी कैटलॉग पब्लिश हुआ 2016 में। राजस्थान में कुल 2.25 लाख सिक्के हैं, जिसमें 7,180 सिक्के दफीनों में मिले हैं, लेट से और दूसरी जगहों से। उनका कैटलॉग है 219 सिक्कों का। और पंचमार्क सिक्के थ्रू इंडिया, पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक मिल रहे हैं। मैंने मेरी किताब में नक्शा भी पेश करा उसका, जो वोट डिफाइन है उन्हीं को उसमें नक्शे में बताया है मार्क करके। तो इस दौरान मेरे अध्ययन से ये बात आई, आशीर्वाद साहब जब जीवित थे उन्होंने भी इस बात से सहमति जाहिर करी। अमित जी ने जो फर्स्ट स्लाइड बताई थी जिसमें इन्होंने कैटेगरी करी थी उसको, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। बेसिकली मेरा मानना ये है, पंचमार्क सिक्के जहाँ भी चांदी को पतला करने की हमारे पास फैसिलिटीज थी, वहाँ हमने चांदी के सिक्कों का साइज बड़ा रखा था, लेकिन जिन टकसालों में चांदी को गलाने की और पतला करने की हमारे पास टेक्निक नहीं थी, वहाँ हमने सिक्कों को मोटा रखा था। लेकिन इन सब सिक्कों में थ्रू कन्याकुमारी से लेकर पेशावर तक जो दफीने मिल रहे हैं, उन सिक्कों का भार एक रहा है और जो 5 सिंबल्स हैं वो एक रहे हैं।
1, 2, 3 जो सिंबल्स हैं वो कॉमन रह ही रहे हैं। मैंने मेरे जो कैटलॉग पब्लिश कराया उसमें इस तरह से कराया कि 1, 2 सिंबल्स तो बिल्कुल कॉमन रहा है। थर्ड सिंबल्स के जो है उसका मैंने चार्ट दिया है। थर्ड सिंबल्स 3 आज से ज़्यादा मिला है। फिर उसके बाद ये वृषभ वाला मिला है और उसके बाद एलिफेंट वाला मिला है, इसलिए उसको उस कैटेगरी वाइज थर्ड सिंबल्स को चेंज करा गया है। और 4 और 5 जो है वो बहुत कम मिला है सिक्कों पे। तो मेरा ये मानना है थ्रू आउट इंडिया में बहुत बड़ी डायनेस्टी रही है और पंचमार्क सिक्के उसी डायनेस्टी के हैं। तो अमित जी ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा पेपर है, लेकिन ये अगर इस तरह से इसका अध्ययन किया करा जाए तो एक अच्छा नतीजा रहेगा। थैंक यू। हम लोग पॉइंट के कलेक्शन पर निर्भर थे और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो किस प्रकार से हमारे यहाँ कैटलॉगिंग और फिर कल्चरल स्टडी पॉइंट्स होती है। आज जब समय है जहाँ कि हम डिफरेंट डिसिप्लिन को कोलैबोरेट करते हुए स्टडी करते हैं और इसको हम डिजिटल एरा कहते हैं, साइंटिफिक एरा कहते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन को निश्चित रूप से इन मेथड के सहारे जज करने की जरूरत है। और जहाँ तक एक और बात कही सर आपने, ये पॉइंट्स मैंने पर्सनली लैब टेस्ट किए। इट्स नॉट बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ दिस, नॉट बेस्ड ऑन द बुक नॉलेज, सो आई हैव एक्सपेरिमेंटेड इट, देन आई ट्राई टू प्रेजेंट इट। थैंक यू।